Welcome to another class of A-level Media Studies. And today we are going to have discussion regarding a blog post assignment, as well as we will try to cover some new content regarding media regulations. Since we are supposed to complete regulations first, and we will move on to postmodern media along with our blog post for our project. And ultimately, once COVID would be clear and we would be uh, ready and allowed to mobilize and move and gather, then we would be starting our work for practical shooting, either of our documentary or music video or short film or just a teaser. Although I suggest short film and teaser, they are not in the list uh, unofficially, because they have some challenges associated, and which I feel that you won't be able to manage due to a lot of factors, especially COVID-19. However, documentary and music video, they are something new, something different, something challenging, and obviously jam-packed with a lot of learning. Well, talking about your assignment, I gave you this assignment a while ago last week, and uh, I guess except one of you, none of you has bothered or tried to do these posts, or if you did, there is somebody you didn't share it with me on Google Classroom, or done or not done something like that. Although I checked other students blogs, and I couldn't find anything there. Those who shared with me their URLs, well, most of you haven't even shared your URLs, which I assume that you haven't created and haven't done anything. Uh, uh, I don't know, where are you busy at these days in COVID-19? Uh, Whatever you are doing, you will have to, uh, you know, balance and manage things, since your A2 is started officially. It has been started now, and you have to get back on track. I don't want to waste today's time in doing bhashan and stuff like that. You are mature enough to know what is good and what is not so good for you people. And if you won't manage time now, later on you will find yourself in trouble. And very soon I will share with you people your monthly grade as well. So just wait and watch. Uh, so this is it. If I talk about posts, mm, the first post for A2 is quite simple, just like your AS post, candidate introduction, where you will post your introduction, 3-4 paragraphs about you, your personality, what you want to achieve in life, and why did you take media studies, and what kind of career you are seeking. You can go for it. Well, getting back to, yeah. Then second post is simple, the introduction of your course as per your understanding. And you will be talking about generally about the whole media studies, and especially A2, the paper pattern, the update, the new one, and the practical work, the 4 options: um, film, teaser, documentary, or music video. Then, although I've made this handout or made these assignments for the perspective of music videos, but if any of you is interested to go for documentaries, you can switch to history and evolution of documentaries, or otherwise history and evolution of music videos. Obviously इंटरनेट रिसर्च है, आपको 5-6-10 वेबसाइट्स देखनी है, उनमें से इंफॉर्मेशन लेनी है, और अपने वर्ड्स में रिफ्रेश करके अपनी फाइंडिंग्स को आपने 3-4-5 पैराग्राफ्स में लिखना है, और सपोर्टेड बाय सपोर्टिंग इमेजेस एंड यूट्यूब वीडियोस. अगर आपको म्यूजिक वीडियो की हिस्टोरिकल वीडियो नज़र आती है, या उसका कोई पोस्टर नज़र आता है, समथिंग लाइक दैट, आप समझदार है. उसके बाद फोर्थ पोस्ट है रिसर्च इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक वीडियोस. फिर टाइप्स क्या होती हैं म्यूजिक वीडियोस की, क्या काइंड्स होती हैं, किन कैटेगरीज में लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, वो चीज़. उसके बाद टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक वीडियोस. टेक्सचुअल एनालिसिस आपको मैंने सिखाया हुआ है पहले ही ऑलरेडी. क्या होता है टेक्सचुअल एनालिसिस? जैसे हम एएस में करते थे,
उस म्यूजिक वीडियो में उन्होंने कैमरा वर्क कैसे किया हुआ है जिसमें एंगल शॉट्स एंड मूवमेंट्स हो जाएंगी। उस म्यूजिक वीडियो में उन्होंने एडिटिंग कैसी यूज़ की हुई है, क्रॉस कटिंग, पैरेलल एडिटिंग, किस तरह का सब कुछ है। उसके बाद उसमें मेजोसन यानी एम्बियंस, प्रॉप्स, एक्टिंग, स्टेज, सब कुछ कैसे सेट किया हुआ है, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, एवरीथिंग यू विल कमेंट ऑन दैट। और ऑब्वियसली जॉनर से मैच ही होता है। ऐसा नहीं होता कि हैप्पी सॉन्ग और सैड क्लोथ पहने हो, लोकेशन पे उसके अकॉर्डिंगली होती है। और अगर एक सॉन्ग में दो फ्लेवर्स हैं, दो सिचुएशंस है, हैप्पी एंड सैड बोथ, तो उसके अकॉर्डिंगली चल रहा होता है सब कुछ। तो यू विल हैव टू नोटिस एंड टॉक अबाउट दैम। उसके बाद एडिटिंग हो गया। साउंड नॉर्मल म्यूजिक वीडियो में पीछे एक प्लेबैक हो रहा होता है साउंड, उसमें कोई ख़ास साउंड ट्रीटमेंट नहीं होती, डायजेटिक नॉन डायजेटिक इस तरह की चीज़ें नहीं होती आमतौर पर फॉलिस टाइप। तो शायद उसका इतना इसमें लिखने का रोल नहीं होगा। और उसके बाद सिमिलरली एक्टिंग स्टाइल वगैरह को मेंशन कर दोगे, लाइटिंग के बारे में आप लिखोगे, तो ये टेक्सचुअल एनालिसिस है। आप दो डिफरेंट टाइप म्यूजिक वीडियोस की एनालिसिस करोगे, पॉप की कर लोगे, एरा कंट्री साइड कर लोगे, मे बी हैवी मेटल कर लोगे, जैसा आपको तीन चार अच्छे लगते हैं उन, या अपने फेवरेट तीन चार डिफरेंट सॉन्ग्स को, लेकिन वो डिफरेंट होने चाहिए, उनको आप कर लो। ठीक है, एनालिसिस कर लोगे। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, लेंथी एक्टिविटी है, लेकिन ऑब्वियसली इसकी वेटेज है। और सिक्स पोस्ट आपके रिसर्च इनटू कैमरा टेक्निक्स फॉर म्यूजिक वीडियो। अब म्यूजिक वीडियो की कैमरा टेक्निक्स डिफरेंट होती है फिल्म से या और फिल्म ओपनिंग से। उसमें कैमरा मूवमेंट बहुत ज़्यादा रखते हैं, स्टडी रखने के लिए गिम्बल्स यूज़ करते हैं, कैमरा एंगल्स, कैमरा मूवमेंट, कैमरा शॉट्स जो हैं वो अ, होती हैं। उसमें नॉर्मली आप मिड शॉट लेके लेते हो या फुट शॉट लेते हो, मिड क्लोजअप में भी आते हो, कंटिन्यूस रखते हो, आर्क शॉट्स लेते हो। अगर आप स्टोरी चला चला रहे हो साथ साथ, तो स्टोरी भी दिखाते हो, आमतौर पर स्लोमो ले जाते हो स्टोरी में आप, थोड़ा सा या ज़्यादा आपकी मर्जी होती है। सो यू हैव टू टॉक अबाउट दैम। आई थिंक ये क्वाइट ऑब्वियस था, यही लिखना था आपने। और आप में से जिन बच्चों ने किया है उन्होंने ठीक किया है, बेहतर किया है। सो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने की बात है, तो कोशिश करें आप लोग इंटरेस्ट लें और वेकेशन मोड से वापस आ जाएं। थैंक यू। अच्छा, ये तो हो गया लिटिल रिमाइंडर अबाउट योर ब्लॉग पोस्ट असाइनमेंट, जो कि आपकी ब्रीच होगी उसकी डेडलाइन। एंड ऑब्वियसली जब डेडलाइन ब्रीच होती है तो 50% डिडक्शन हो जाती है। अब पर पोस्ट जो है 10 मार्क्स से, तो पर पोस्ट जो है आपको 5 में से मिलेंगे। मसलन अगर 10 में से 8 मिलने थे, तो अब आपको 10 में से 3 मिलेंगे या 4 मिलेंगे, समथिंग लाइक दैट। अब 5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो गए हैं, इन अदर वर्ड्स, फॉर नॉट मीटिंग द डेडलाइन अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, जो भी रीज़न था। बट हमें सीखना है ना डेडलाइंस को मीट करना, दैट्स वाई। और आपका मंथली जो ग्रेड है आपसे इंशाल्लाह विद इन अ डे और टू में शेयर कर लूँगा कि आपका जून का क्या ग्रेड बनता है। इस तरह हर मंथ का आपको ग्रेड मिलेगा, जिसमें क्लास वर्क, असाइनमेंट्स, रिटन असाइनमेंट्स, ब्लॉग पोस्ट एंड क्लास अटेंडेंस, ये सारे इनके इस फार्मूला में मैं डाल के एक मंथली ग्रेड आपको दूंगा। वही ग्रेड आपका CI को फॉरवर्ड होगा। सो दे विल बी नो हार्ड फीलिंग्स। आपको भी पता होगा कि मैंने अगर जून में परफॉर्म नहीं किया, तो मैं जुलाई अगस्त 2 महीने अच्छा परफॉर्म कर लूँगा, तो मेरा जून एक तरह से उसके नेगेटिव इफेक्ट्स काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएंगे या वाइप आउट हो जाएंगे। सो द बॉल विल बी इन योर कोर्ट ऑल द टाइम टिल यू कैन से February 2021, आपके मॉक्स तक। ठीक है, और मॉक हो जाएगा तो उसके भी ऑब्वियसली वेटेज ऐड हो जाएगी। तो एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स। आप मुझे आपने नहीं कहना सर हमारा ख्याल करें, आपने अपना ख्याल खुद करना है। ठीक है, पिछले साल मैंने आपका ज़रूर ख्याल किया था, पर इस साल आपको अपना ख्याल खुद करना होगा। तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। अच्छा, मूविंग ऑन टू टुडेज टॉपिक नाउ, द थ्योरी वन, कंटेम्प्रेरी मीडिया रेगुलेशंस। आज हम नया ऐसे और उसकी प्लानिंग, कैसे आप प्लान करते हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को या ऐसे को, हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। और फिर हम कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी देखेंगे। Who will explain which forms of media regulation are the most effective, which are not so, and your reasons for both। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो कि मैंने इंट्रोडक्शन देना है। देखिए, आपको मैंने हमेशा बताया इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन तो मैंडेटरी पार्ट्स हैं, और बीच में बॉडी होगी। पॉजिटिव चीज़ ये है कि पहले जो 50 मार्क्स का होता था, अब वो 25 मार्क्स का हो गया है। तो इट्स नाउ मोर डूएबल, यू कैन से इट्स मैनेजेबल नाउ। So sorry,
50 मार्क्स का नहीं, 15 मार्क्स का। पहले 50 का था ना, अब 15 का हो गया है, 25 का नहीं हुआ। वो कोई और एग्जाम है, सॉरी। एनीवेज, सो 15 मार्क्स, 15 मार्क्स के लिए लिखना, इट्स क्वाइट कन्वीनियंट, यू नो। 1.5 से 2 पेज अच्छा कंटेंट हो जाए, 15 मार्क्स, 14 मार्क्स, 13 मार्क्स आ सकते हैं। वेल, सो क्वेश्चन हमने देख लिया। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे इन मीडिया रेगुलेशंस takes different forms, some more effective, better than others. हिस्ट्री में आप थोड़ी सी जाना चाहो तो जा सकते हो। बीबीएफसी क्या है, कब बना, और वो एज रेटिंग्स कौन कौन सी प्रोवाइड करता है। और जो R18 है वो एडल्ट वर्क्स है फॉर लाइसेंस प्रेमिसेस ओनली, यानी पब्लिक प्लेसेस पे नहीं। और 18 जो है आप अपने घर पे भी देख सकते हो। सिनेमा एंड डीवीडी सेंसरशिप क्या होती है, फिर पैगी के बारे में इस हैंडआउट में दिया गया है, बिकॉज ये हैंडआउट बनाया गया था फॉर अ 50 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। और सिंस सिलेबस अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, तो अभी 15 मार्क्स के लिए मैं आपको रिवैम्प करके दूंगा वेरी सून इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम पुराने कंटेंट तो वही रहेगा ना, सिर्फ आपने इसका फर्दर क्रैक्स एंड समराइज वे में आपने इसको एक्सप्लेन करना है, और आपके 1.5-2 पेजेस हो जाएंगे। पैगी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पैन यूरोपियन गेम्स इंफॉर्मेशन है जो 2003 में बना था, जो गेम्स के लिए एज रेटिंग देता है 3, 7, 12, 16 एंड 18। अब केस स्टडी जो हम बात करेंगे जो इस डॉक्यूमेंट में, जो कि क्वेश्चन को एड्रेस करते होंगे कि मीडिया फॉर्म जो है कुछ इफेक्टिव है, कुछ इफेक्टिव नहीं है, वाई, व्हाट डू यू थिंक। अब इसमें हेट क्राइम्स के बारे में देखेंगे जो बैन हो गई थी, न्यू नाजी रेप एंड वायलेंस के बारे में देखेंगे, द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू पास्ट अनकट 15 उसको रेटिंग मिली थी, और वायलेंस, सेक्स एंड रेप ये चीज़ केसेस जिन फिल्म्स में दिखाए गए उनको क्या रेटिंग मिली, उनको साथ क्या ट्रीट किया बीबीएफसी ने। गेम्स में हेट्रेड दिखाया तो टेम्पररी बैन हो किया था, और गेन एन एडल्ट ओनली रेटिंग सेकंड गेम टू गेन इट। कुछ होती गेम्स जिनको रेटिंग मिल जाती है ऐसी। GTA 5 कार ड्राइविंग गेम और शूटिंग गेम, यू नो GTA 5 में शूटिंग भी कर सकते हैं, आपको पता है, कार ड्राइविंग भी होती है, और इसको 18 मिली थी। सो उसके बाद हम कंक्लूजन करेंगे कैसे आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को सम अप करोगे, और फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा अपना फीडबैक दोगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं इसकी बॉडी की तरफ। Many forms of regulations exist for both film and video games. There are effective ones and ones that are less or not so effective. That if अच्छा हम दो चीज़ों के बारे में क्यों लिख रहे हैं, अगर हम एग्जाम क्वेश्चन देखें तो you should refer to one or more media forms in each answer. मैं आपके लिए इसको कंपल्सरी कर रहा हूँ कि आपने 2 मीडिया फॉर्म्स के बारे में लिखना है, फिल्म एंड ईदर गेम्स और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर पहले वो ऑप्शन नहीं थी, अब उन्होंने ऑप्शन दे दी हुई है, तो मैं सोशल मीडिया के बारे में भी आपको काफ़ी कंटेंट दूंगा कि उसकी रेगुलेशन कैसे होती है, कैसे हो रही है, क्यों करने की ज़रूरत आ रही है, और नहीं करते तो क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। विल टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट क्लासेस। सो हियर वी गो। So the difference in film and video games release is that making a film a lot more regulating, making the regulation more effective. To show this, there are the regulation bodies for of BBSC, as you know, the British Board of Film Classification, and PAGI, Pan European Games Information, as well as some theories uh, that both support and criticize a strict regulation of media text. Media text means media products, films and games both, and other magazines and stuff like that. The case studies that I will be, yeah, you will be getting today थ्रू आउट द फिल्म, इसमें हेट क्राइम होगी, फिल्म का नाम है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू, एंड वीडियो गेम्स ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 एंड हेट्रेड। द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ रेगुलेशंस एट रिलीज फॉर फिल्म्स इज द सिनेमा एज गेट। आपको भी पता है फिल्म्स के लिए जो सबसे इफेक्टिव वे टू इम्प्लीमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ये ना कि इतनी इफेक्टिवनेस के बारे में कमेंट करें है या नहीं है, तो एज गेट है, यानी कि बाइंग अ टिकट टू अ न्यू फिल्म मींस दैट you have to go through the ticket checking, in which the age cinema staff will be able to identify as to whether you are the correct age for the film. This can be done by requesting ID from people who are questionable, or seeing someone is clearly too young. Films are regulated and then given an age rating by the BBFC, which is an effective, independent, and non-governmental regulatory committee that was founded in 1912 and provides age certificate
and regulates all films that are to be released in the UK. This means that they have had over 100 years to perfect their regulation method so that they only need to change with society views. इसका मतलब ये होता है कि वक्त के साथ साथ जो सोशल वैल्यूज चेंज होती है तो वो अपने आप को थोड़ा सा ऑल्टर अलाइन करते हैं. Age ratings are given based on the board of censored decisions, which then allows for cinemas to regulate the control entry to film as the rating 12, 12A, 15, and 18 offer a clear distinction for regulation. The BBFC was founded in 1912 under the name of British Board of Film Censors. I told you पहले ये censors था, अब ब्रिटेन में censorship का concept खत्म हो चुका है, अब वो classification करते हैं. Censorship का concept खत्म होने का मतलब ये है कि you can have any kind of content in your film. सिर्फ फर्क ये है कि एज एप्रोप्रिएट उसके अकॉर्डिंगली जो होंगे उन्हीं को फिल्म देखने का मौका मिलेगा. इन एप्रोप्रिएट एज वालों को फिल्म नहीं देख पाएंगे. दिस इज इट. आप एटम बॉम्ब तक बनाना सिखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो फिल्म नॉर्मली बिकॉज इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट, इट्स अ फिक्शन. सो और फिक्शन कैन बी ऑफ एनी टॉपिक. They can be horror, they can be funny, they can be based on dreams within dreams, जैसे Inception movie थी, you know, maybe sci-fi, Star Wars type, कुछ भी चल सकता है, बस उसको क्लासिफाई करते हैं. अब वो सेंसर नहीं होता, पहले सेंसर हुआ करता था. When local authorities were hold on, sorry. When local authorities were starting to impose their own varying regulations and censorship standards, the name was then changed in 1984 to British Board of Film Classification, as it reflected the classification was a larger part of their work than the censorship of film's content. Censorship बहुत हद तक नहीं होती, like I told you, अब नहीं होती है. Until कोई content बहुत ज़्यादा direct हो against the homeland security, ये लोगों को उकसाने वाला हो, क्वीन के खिलाफ एंड सो ऑन, कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तब शायद उसको बैन कर दें या सेंसर कर दें. अदरवाइज वो सिर्फ क्लासिफाई करते हैं. Hate Crime is a 2013 film directed by James Cullen and is about a Jewish family being attacked by neo-Nazis who proceed to abuse them verbally and physically. The film was presented to BBFC for a UK release, although it was refused a certificate and therefore banned in the country. The work was rejected because of the strong racist verbal language as well as physical violence and scenes of rape. Some showing of these features of not enough to get a film banned, but as the film had a lack of context provided for the actions carried, it could be taken to be encouraging this behavior and treatment in younger people who are more impressionable to what they see in the media. Yes, यही फैक्टर था कि यंग लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं चीज़ों से, इसलिए उन्होंने उसको बैन कर दिया था. The film itself appears to be from a handheld angle, making it look as though it's real life footage that has been taken and put into a film as opposed to a stage shoot which with a script and people controlling the set. Due to film being about well neo-Nazis attacking a Jewish family, the little context of the film is that rape, torture and murder are being carried out against this family because they are Jewish or they were Jewish, as well as the house of drugs and highlights of its use. These actions led to it being refused a certificate for UK showing. Uh, Performing cuts on the film to reduce the amount of these scenes would have been possible, although it was noted that removing of those scenes would likely reduce the context to be even less than the little context there already was. यानी फिल्म का ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट बहुत कम था, लग रहा था बेतुकी इंसिडेंट्स हो रहे हैं और फुटेज ऐसे ली गई थी जैसे ये रियल लाइफ फुटेज है, कोई फिल्म के फुटेज नहीं है, और इससे लोगों को बहुत नेगेटिविटी फील हो रही थी, एग्रेशन था, और लोग इससे नेगेटिव या पॉजिटिवली इंस्पायर हो सकते थे, नॉट पॉजिटिवली बट नेगेटिवली मोस्टली. इस वजह से उन्होंने उसको सर्टिफिकेट इशू नहीं किया. सर्टिफिकेट इशू ना करने का मतलब ये नहीं होता कि फिल्म बैन हो गई है. एक्चुअली बीबीएफसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, और बीबीएफसी जो है उनके सिनेमास के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो सिनेमास उनको बैन कर देते हैं. बीबीएफसी बैन नहीं करता क्योंकि बीबीएफसी की कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है. बीबीएफसी इज जस्ट you can say a self-regulatory body. ठीक है? Well, I think we should pause here and I will make another video
with you people, and then we would go on. Uh, I think we can cover this content and उसके बाद हम wrap up करते हैं. The Girl with the Dragon Tattoo is a 2011 film directed by David Fincher about a disgraced reporter finding a chance to redeem his honor when hired to solve a 40-year-old murder of a wealthy Swedish man's niece. The film was presented to BBFC and passed uncut with an 18 rating due to strong scenes of sex and sexual violence. The work was passed uncut as although the sex scenes and sexual violence were rather strong, they did not push is beyond the boundaries of an 18 rating. If the producer had wanted a low rating for the film, the amount of nudity, sexual violence, and sex would have had to be cut down to reduce the number of scenes for the younger, more impressionable audience. Impressionable audience का मतलब ये होता है कि जो जल्दी और impression लेती है, inspire हो जाते हैं. The portrayal of revenge throughout the film is also not covered up to the discreet, meaning that younger people may be led to believe that enacting revenge is a good thing. Films that are being produced today push the boundary of age rating further than previous works, and due to this, the age rating are constantly updated to suit the changes in society as to what is acceptable and what is not. अब acceptability change होगी with time, so उसके accordingly वो ratings को भी उसके accordingly update करते रहते हैं. An example of this is that previously it was viewed as wrong to show people an openly gay within films, although this is no longer an issue today. अब किसी को गे दिखाना फिल acceptability बन चुकी है. पहले it was very difficult to absorb. यहाँ तक फिल्म्स का था. इसके बाद हम games के ऊपर आ जाएंगे. So let's pause here and we shall resume in the next lesson. I'm trying to make these videos short as possible, as shortest as possible, so that you may be able to digest, understand, and you could be able to do your own research accordingly. Because at the end of the day, you will be appearing yourself in the exam. Well, inshallah, see you in next class. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.